हाँ, नमस्ते। स्वागत है आपका अनमोल इंसाइट्स पे, जहां आपको मिलते हैं अनमोल ज्ञान की मोतियां और समृद्ध शिक्षा का खजाना। I am thrilled to embark on this educational journey with you all. Today, let's delve into the syllabus of class 10th. In this video, we are going to cover the overview of syllabus of class 10th. Not only the overview, but इसमें we have discussed all the important topics related to all the subjects and all the chapters. And at last, I have also discussed how the question has been asked. Question कैसे पूछे जाते हैं. So please ये वीडियो को पूरा देखें and for all the students of class 10, this is very helpful for you. So हाँ, in class 10th, we explore the diverse area of subjects. Let's take the overview of syllabus of class 10. No, not only the overview, we are going to explore all the important topics across all the subjects. Starting with maths. मैथ सिर्फ हमारे एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को चैलेंज नहीं करता, ये हमारे फ्यूचर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंडरग्राउंड को भी ली करता है। तो मैंने मैथ्स को फाइव टॉपिक्स में डिवाइड करके रखा है। एल्जीब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली ये क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार मैंने इसे डिवाइड किया है। सो इन एल्जेब्रा मैंने इसमें 4 चैप्टर्स रखे हैं। फर्स्ट वी हैव पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। And also we are also going to see division algorithm and all. अलजेब्रा के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है linear equation of two variables. ऑब्वियसली ये जो लीनियर इक्वेशंस आएंगे वो पेयर में आएंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद टू मेथड्स। फर्स्ट इट इज graphical method and second algebraic method. Also in algebraic method we also have two methods. First is substitution method and another method is elimination method. Now another next chapter in algebra is quadratic equation. Third chapter in algebra is quadratic equation. In quadratic equation, we are going to see solution of quadratic equation. We are going to learn how to solve quadratic equation. Factorization and also nature of roots. Here root stands for solution. So, and the last chapter of algebra is arithmetic progression. Here root stands for solution. So, and the last chapter of algebra is arithmetic progression. And the last chapter of algebra is arithmetic progression. So, and the last chapter of algebra is arithmetic progression. And the last chapter of algebra is arithmetic progression. So, and the last chapter of algebra is arithmetic progression.
We also call this AP. In this chapter, we are going to see how to find the nth term of AP and sum of the first n terms of an AP. So this is algebra. Now going to the next topic, which is geometry. Which is geometry, obviously. ज्योमेट्री के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ट्रायंगल. ट्रायंगल के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सिमिलर फिगर्स. ऑब्वियसली सिमिलर फिगर पढ़ के हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलरिटी. अगेन हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू सी सर्कल्स. In this chapter, we are going to see tangent of a circle, and number of tangents. ज्योमेट्री के अंदर नेक्स्ट थिंग जो मैंने रखा है वो है कंस्ट्रक्शन. क्लास 10 में जो कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है वो 2 बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वी हैव बाइसेक्टर्स, हाउ टू फॉर्म बाइसेक्टर्स, एंड सेकंड हाउ टू फॉर्म टेंजेंट ऑफ द सर्कल. फॉर्म टेंजेंट ऑफ द सर्कल. नाउ लेट्स टॉक. मैंने मेंसुरेशन को 4th चैप्टर जो इसके अंदर है ज्योमेट्री के अंदर वो मेंसुरेशन. मैंने मेंसुरेशन को ज्योमेट्री के अंदर इसलिए रखा बिकॉज ऑब्वियसली मेंसुरेशन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप्स. तो क्लास 10th में वी आर गोइंग टू फाइंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल and obviously a surface area and volumes of solid shapes. Solid shape means cube, cuboid, cone, cylinder. ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सॉलिड शेप्स आने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होने वाले हैं. कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भर के रहने वाली है. उतना हार्ड नहीं है पर लॉजिकल है. एंड अगेन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला, section formula, and area of triangle using distance. So this is about geometry. Now we will talk about trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. What are sine, what are cosine, what is tan, what is cot, tangent, basically. Again, trigonometric identities.
and height and distance. Height and distance is the application of trigonometry. The angle of elevation, इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि angle of elevation क्या है and angle of depression क्या है. ये डिस्प्रेशन वाला डिस्प्रेशन नहीं, डिप्रेशन वाला डिप्रेशन है, समझ रहे हो ना ऐसे. So this is the trigonometry. Now let's jump into the real numbers. रियल नंबर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा, and also we will go through irrational numbers. So this is about real number. Now jump into statistics and probabilities. So in statistics and probabilities, first we are going to have how to find mean, median, and mode of group data. And in probability, obviously we are going to see basic concept of probability. Basic concept of multiplication theorem, बेसिक थ्योरम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये सब हम लोग देखने वाले हैं. ज्यादा बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है मैथमेटिक्स का. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स. अगेन मैथमेटिक्स, I have divided mathematics in five topics. So first is algebra, जो algebra के अंदर हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के अंदर है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट. सेकेंड चैप्टर जो है अलजेब्रा के अंदर वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं टू वेरिएबल्स वाले, दैट विल बी इन पेयर. सो द लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद टू मेथड्स, ग्राफिकल मेथड एंड algebraic method. Algebraic method is also of two types, substitution method and elimination method. Then we have quadratic equation. Also we are going to solve the quadratic equation, nature of the roots. Arithmetic progression, we are going to find the nth term of the arithmetic progression. Geometry के अंदर we have triangles, circles, constructions, mensurations के अंदर हम लोग निकालने वाले area of circle, surface area and volumes of complex subs. Coordinate geometry उतना diverse way में तो नहीं है, but we have 2-3 topics which we have to learn, that is distance formula, section formula and area of triangle using distance formula. Last is trigonometry, not last basically trigonometry. Trigonometry में हम लोग पढ़ेंगे trigonometric ratios, trigonometric identities. Trigonometric identities के अंदर हम लोग देखने वाले हैं Pythagorean identities. That means we are going to see Pythagoras formula and all. Then we have height and distance, which is basically the application of trigonometry. Then we have real numbers. Real numbers ज्यादा बड़ा और vast तो नहीं है, but we have 3 important topics. Fundamental theorem of arithmetic, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है. यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और इरेशनल नंबर से. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज में स्टैटिस्टिक्स ज्यादा अच्छा से डिस्क्राइब नहीं है क्लास 10th में, अगर if we are comparing it to the higher classes. बस इसमें we have to find mean, median and mode of group data.
और प्रोबेबिलिटी में हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेसिक कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी बस. सो दिस इज फॉर मैथ्स. नाउ साइंस. Science takes us to the journey through the wonders of natural world. From laws of motion to the chemical reaction, we uncover all the mysteries of the world, of the universe. So we all know science is divided into three parts. That is physics, chemistry, and biology. But in the book of class 10, we can add one more part. That is environmental science. It is a separate topic. There are separate chapters describing this topic. So, now, in physics, we have four chapters. But in old NCERT, we have 5 chapters. So, in physics, the first chapter is light. So, we are going to study reflection, refraction through prism, second chapter is human eye. Obviously, we are going to see properties, how it is made, and what are the defects in the human eyes and all. It is a factual. This chapter is a factual chapter. There is not, यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है अगर बेसिकली हम अच्छा से एनालाइज करें तो. नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बस थोड़ा सा देखने वाले हैं. बिकॉज हम लोग थोड़ा सा इसलिए देखने वाले हैं बिकॉज वी हैव सेपरेट चैप्टर इन फिजिक्स that is magnetic effects of currents. Under this, we are going to see what is magnetic field, what is magnetic field lines, electromagnetic induction. Electromagnetic induction is basically how electric current is produced from a magnet and a coil. There are two appliances like electric generator and electric motor. These are the 4 chapters. These are the 4 chapters in our new NCERT. But if we talk about our old book, there is another chapter जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा. That is sources of energy. In source of energy, we have to learn conventional energy type, non-conventional energy, renewable and non-renewable energy,
and obviously what is non-renewable energy. So this is all about physics. Now let's jump into chemistry. In chemistry, we have first chapter, chemical reaction and equation. इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, and balancing of chemical equation. Again, next chapter is acid, base and salt. एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग पढ़ें एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट. फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन. Obviously, what is going to happen when acid and base reacts. And next topic is salt preparation. It is interrelated to neutralization, but yeah, it is separate topic which we are going to study in this chapter. Next chapter we are going to study metals and non-metals. In this chapter, we are going to study properties of metals, and non-metals, reactivity series, extraction of metals, next chapter which we are going to cover in chemistry, carbon and its compounds. In carbon and its compounds, we are going to study bonding in carbon. Next topic is hydrocarbons. And at last, we are going to learn a small of functional group, because we are going to study in vast what is functional group in class 12th. क्लास 10 में छोटा सा है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है फंक्शनल ग्रुप का, बस मजा आएगा पढ़ने में. One chapter is excluded from the new book is periodic classification of elements. अब पुराने बुक में ये तो था पर नई बुक में नहीं है. अगर फ्यूचर में if we see it is necessary to learn this chapter, then we will learn. And from now on, I am resting this case. So, jumping into biology, we have 4 chapters.
फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ने वाले लाइफ कैसे प्रोसेस करती है हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन लेते हैं तो रेस्पिरेशन भी, हम सांस भी लेंगे ही। हमने खाना खाया, अब खाना को एनर्जी में चेंज करने के लिए हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। अब रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी बनी उसके बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने के लिए हमको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। और जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में होंगे ही। तो वेस्ट मटेरियल्स को हम बाहर कैसे करते हैं वो भी हमें पढ़ना है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो खाना खाना, खाना से एनर्जी बनाना, सांस लेना, रेस्पिरेशन बेसिकली, एनर्जी को ट्रांसफर करना पूरे बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ एनर्जी नहीं सब कुछ ट्रांसफर करना है, एंड एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालना है। अब खाएं तो निकालना तो होगा ही। So here is the thing. Now, next chapter is control and coordination. In control and coordination, we are going to learn about nervous system. And obviously we are going to learn about chemical coordination of animals and plants. Next chapter in biology is how do organisms reproduce. सबसे बेस्ट अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर हम लोग दो मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन and second topic is reproductive health. And now the last chapter in biology is heredity evolution. इसके अंदर टॉपिक्स है जेनेटिक्स, व्हाट आर जेनेटिक्स, मेंडल्स लॉ, स्पेशिएशन, स्पीशीशन इसको हम बोल सकते हैं, स्पेशिएशन को। स्पेशिएशन है बेसिकली एक स्पीसीज से नई स्पीसीज को कैसे हम लोग बेयर करते हैं, सॉरी। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी, 4 chapters, life process, control and coordination, how the organism reproduce, and heredity and evolution. And as I talked about earlier, we also have environmental science. In environmental science, there is only one chapter, our environment. In previous book, we have another chapter, management of natural resources. बट वो हट गया है, मे बी इसके कुछ टॉपिक्स को इसी में ऐड कर दिया गया और वो चैप्टर्स को हटा दिया गया। बट इफ वी फील नेसेसरी वी विल लर्न दिस चैप्टर सेपरेट इन फ्यूचर। सो व्हाट आर द कंपोनेंट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर एनवायरनमेंट? फर्स्टली basically components. What are the components that makes our environment? Ecosystem, diversity, sustainable management, conservation of natural resources. So this is science, obviously बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग भी है पॉइंट पे, पर या दिस इज ऑल अबाउट साइंस।
Now, let's jump into the next subject. Now it's time to social studies. Social studies introduces us to human history and society. We examine pivotal events. हम लोग एक्सप्लोर करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड को, और हम लोग उन फोर्सेस के बारे में जानते हैं जो हमारे वर्ल्ड को शेप करते हैं. सो एज वी नो देयर आर 4 बुक्स इन सोशल स्टडीज: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, civics and economics. So let's start with history. In history, we have first chapter which is named The Rise of Nationalism in Europe. इसमें हम 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, थर्ड इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं उसके कॉजेस क्या थे, इवेंट्स क्या थे, और बेसिकली उसके आउटकम्स क्या थे. द एज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे लिबरलिज्म का राइज हुआ. अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ पूरा का पूरा यूरोप में. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बिस्मार्क का रोल क्या था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, गैरिबाल्डी का रोल क्या था इटली के यूनिफिकेशन में, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले यूनिफिकेशन के बाद. देन वी हैव सेकंड चैप्टर, द नेशनलिज्म इन इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया इसको भी हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसके कॉज क्या है, इवेंट्स क्या है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एंड ऑल, एंड मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी मूवमेंट्स एंड ऑल. इसको वास्ट में पढ़ना. अगर इसको हम अभी डिस्क्राइब कर दें तो मजा नहीं आने वाला, इसलिए हम इसे जब पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे. And now there is a third chapter which is named Making of Global World. Making of Global World. Making of Global World can also be divided into 3 topics. First is pre-modern world. Second is 19th century. Third is interwar economy. Under pre-modern world topic, we are going to discuss global trade routes. Obviously, because trade routes define करते हैं इकोनॉमी को. फिर सिल्क रोड, इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स. 19th सेंचुरी में हम देखने वाले हैं कैसे कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म का राइज होता है, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंटरवार इकोनॉमी के अंदर हम देखने वाले हैं कि पोस्ट वार इकोनॉमी क्या थी यूरोप की, और वो यूरोप को कैसे अफेक्ट करती है. Chapter number 4. In chapter number 4, we have the age of industrialization. Industrialization. It can also divide it into 3 basic parts: before industrial revolution, हैंड लेबर क्या थे उस समय, हैंड लेबर,
स्टीम पावर, सब ब्रिटेन के बारे में पढ़ना क्योंकि वहीं पर स्टार्ट हुआ था। सेकंड है कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, कैसे कॉलोनीज तक गई इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, क्या फायदे थे यूरोप, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिस्कवरी ऑब्वियसली यूरोप में हुआ, बट यूरोप वालों को क्या फायदे थे कि अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो कॉलोनीज तक लेके गए। तो इम्पैक्ट देखेंगे हम इसके, इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी, जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो उसके इम्पैक्ट क्या थे, एंड सोसाइटी एंड कल्चर। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है यूरोप में सोसाइटी और कल्चर में बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली इंडिया पे भी पड़ेगी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हाँ, इसके फैक्टर्स को भी हम देखने वाले हैं कि क्या फैक्टर्स थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को ग्रोथ पे ले गए, पीक पे ले गए। एंड लास्ट चैप्टर इज प्रिंटिंग कल्चर। एंड मॉडर्न वर्ल्ड। 3 मेजर टॉपिक्स, प्रिंटिंग प्रेस, इम्पैक्ट क्या थे इसके, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। अब बेसिकली ऑब्वियसली प्रेस आई तो स्प्रेड हो गया आइडिया के रोल ऑफ शेयरिंग पब्लिक ओपिनियन, आइडिया स्प्रेड होंगे, पब्लिक ओपिनियन स्प्रेड होंगे, तो नए नए आइडियोलॉजी पूरा के पूरा दुनिया तक पहुंचेंगे। तो प्रिंट एंड सोसाइटी, सॉरी, इमर्जेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का इमर्जेंस होता है, नोवेल स्टार्ट होते हैं, इम्पैक्ट क्या होंगे इसके ऑब्वियसली, एंड सोसाइटी एंड कल्चर कैसे डेवलप करती है इसके थ्रू। डाइवर्सिटी, यूनिफिकेशन भी लाती है ये, अगर देखा जाए तो हम नए नए कल्चर के तरीके सीख रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या यूनिफाइड हो रहे हैं एज अ वर्ल्ड। तो ये था हमारा हिस्ट्री। नाउ लेट्स जंप इनटू जियोग्राफी। इन जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। In this chapter, obviously, we are going to 2 major topics. First is types of resources, and second is sustainable development. Types of resources के अंदर we will see natural resources. What are natural resources? What are human-made resources? What are natural resources के अंदर obviously that are land, minerals, water, etc. Human resources means infrastructure, industrialization, etc. बायोटिक है और अबायोटिक है, that will also we will learn. Sustainable development, what is the definition of sustainable development, नीड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और स्ट्रैटेजीज क्या है। ठीक है, पुराने बुक में सेकेंड चैप्टर थे हमारे पास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, दैट वाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बस इसके थोड़े से टॉपिक्स को मर्ज अप कर दिया गया फर्स्ट चैप्टर में,
लेकिन अगर हम देखेंगे तो मे बी हम देखें इसको अलग चैप्टर के थ्रू, सेपरेट चैप्टर के थ्रू, बट as of today, second chapter is water resources. Water resources, three major topics are sources, sources of water, second, water management. Under sources of water, we will see what are the sources of water like surface water, groundwater, ocean. मैं क्लियरली नहीं लिख रहा क्योंकि ये फिर डायरेक्ट हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। वाटर मैनेजमेंट के अंदर हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, थर्ड टॉपिक है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स लाइक डैम एंड ऑल। इसके अंदर हम देखेंगे फीचर्स क्या है इन प्रोजेक्ट्स के, बेनिफिट्स क्या हुए हमें इन प्रोजेक्ट्स को लेके, और चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े। अगर कोई झारखंड से है इधर मेरे एरिया साइड से तो उन्हें पता होगा कि जब तिलैया डैम, झुमरीर तिलैया में जब वो बांझेदी प्लांट बना था तो कितने लोगों को डाइवर्ट होना पड़ा था अपने रहने वाले जगह से उठ के। वो बाद में हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं इसे। नेक्स्ट चैप्टर इज एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली। Under agriculture, we are going to see types of farming. Second topic is cropping patterns. Third topic is technologies. Types of farming के अंदर हम देखने वाले हैं कि what type of farming, how many types of farming there are, just like a commercial farming, commercial है या फिर substances farming है, और proper patterns हम देखने वाले हैं what are kharif and rabi crops और different regions में their distribution and their on different regions. टेक्नोलॉजीज के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए इसके अंदर। What are the institutional reforms of agriculture? What is white revolution? Cooperative farming. These are the major topics. इसके अंदर ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसलिए मैं इसे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो जब पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कि ये कितने मजेदार टॉपिक्स है, मजा आने वाला है हमको ये पढ़ने में। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी, मिनरल एंड एनर्जी resources. So first topic is types of industries. Second topic is industrial location factor. टाइप्स क्या होते हैं इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रियल के लोकेशन के फैक्टर, लोकेशन कहाँ होनी चाहिए जो उन्हें ज़्यादा फायदा होने वाली है, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट।
टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइक एग्रो बेस्ड है या फिर मिनरल बेस्ड है या फिर कंज्यूमर गुड बेस्ड है, इंडस्ट्री है। लोकेशन फैक्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि फिजिकल क्या फैक्टर है, फिजिकल क्या फैक्टर से जो उसे अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन फैक्टर। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज वहीं पे होनी चाहिए जहाँ पे उसे वर्कर्स मिल सके, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड ऑल। इंडस्ट्रीज में देखिए हमसे कॉजेस क्या है इसके, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली मेजर क्या क्या उठाए गए, व्हाट मेजर डिड वी टेक टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। हम लोग लेकिन हम एक चीज से एग्री कर सकते हैं कि जितने भी मेजर हम पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उठाए हैं सब नाकाम ही रहे हैं, या तो अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड द लास्ट चैप्टर इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। Three major topics again: transport, communication, and last topic is obviously international trade. तो ट्रांसपोर्ट के अंदर देर आर थ्री फोर वेज लाइक रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड we can add waterway. कम्युनिकेशन के अंदर है टेली कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन और फिर इंटरनेट। तो इंटरनेशनल ट्रेड्स हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ऑब्वियसली ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स भी हमारे इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करते हैं। when we will learn this chapter we will see eventually that रास्ते हमारे इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं। Let's dive into now civics. It's time for civics. The first chapter in civics is power sharing. There are two major topics here: forms of power sharing and second topic is power sharing in democracy. Obviously horizontal है और vertical है. We will learn about that, what is horizontal power sharing and vertical power sharing. Further, important methods. What are the important methods of power sharing in democracy, like federalism? In this chapter, we are going only to learn in brief what is federalism, decentralization, because federalism has a separate chapter. Causes क्या है, benefit क्या है, causes and benefits of all. So second chapter, as I said, we will learn federalism,
What is federalism? What is affection? Two topics here also, meaning and importance. Second topic is challenges. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग वर्क्स, हाउ पावर शेयरिंग वर्क्स, सेंट्रल है या फिर स्टेट वाइज है या फिर कंकरेंट के अंदर है. लेट वी विल सी. चैलेंज ऑफ फेडरलिज्म के है लिंग्विस्टिक challenges means there are the दो ग्रुप्स है, एक ए भाषा बोलते हैं, एक बी भाषा बोलते हैं. तो दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो दोनों में कैसे हम लोग पीस कर सकें. फिर है रीजनल, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी. इतने चैलेंजेस है इसमें और इसको कैसे ओवरकम करना है ये देखेंगे हम फेडरलिज्म चैप्टर में. चैप्टर नंबर 3 we have next democracy and diversity. In democracy of diversity, I have divided this in 3 topics. First is diversity in India. Second is necessity of accommodation. Third is democracy and diversity. डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे रिलीजन एंड रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर. नेसेसिटी ऑफ अकोमोडेशन के बीच देखना कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कराना एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए. एंड डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के अंदर हम देखना है मेन इसके अंदर भी क्या अकोमोडेशन हम लोग को सीखना है कि कैसे डाइवर्सिटी है तो उसके चैलेंजेस, डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को हम अकोमोडेट कैसे करें, उसको शांत कैसे करें. और ऐसे रास्ते, ऐसे पाथ्स हमको देखने होंगे कि ये जो अकोमोडेशन वो पीसफुली हो, ऐसा नहीं कि हम राय जाके बंदूकें चला दें. वो इसके अंदर हम देखने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के अंदर. Next chapter is gender, religion and caste. Gender, religion and caste. Gender, religion and caste में हम देखने वाले हैं gender and politics. Second topic is religion, communalism, politics. Third topic है caste and politics. जेंडर एंड पॉलिटिक्स में वही है कि कैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुए, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे होते हैं. रिलीजन का हम लोग ये देखना कि कम्युनलिज्म कैसे चैलेंज बन जाता है इन डेमोक्रेसी. कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हम देखने वाले हैं कि कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं एंड ऑल.
Let me give 1 second, please. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, पर इसके क्या बोलते हैं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो होते हैं, पर इस पे एफर्ट्स भी तो लगाए गए होंगे ऑफ इक्वालिटी के। जहां डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पे एफर्ट्स भी लगाए गए होंगे इक्वालिटी के, एफर्ट्स ऑफ इक्वालिटी। So this is gender, religion and caste. Last chapter is political parties. In political parties, we have 3 main topics: role of political parties, national political parties, and third is challenges. रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हम देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी, हाउ दे फंक्शन। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखेंगे व्हाट आर द आइडियोलॉजी ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज। ऑर्गेनाइजेशनल पार्टीज कैसे एक्ट करते हैं, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस एंड ऑल। चैलेंजेस हम देखते हैं कि लैक ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, कोई भी पार्टी के अंदर ही नहीं चलती उनकी डेमोक्रेसी, या फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। पार्टी का हेड है तो उसका बेटा है फिर नेक्स्ट पार्टी हेड बन रहा है। दिस इज ऑल अबाउट सिविक्स। सिविक्स थोड़ा लॉजिकल और लेंथी सब्जेक्ट है, बट interesting. Now take economics. Economics is the most understandable subject in social studies. First chapter is development. So, in development, there are 2 major topics: sustainable development ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे थे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या है यहाँ पे भी हम फिर देखेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स क्या क्या है एंड ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या सेट किए हैं गोल्स एंड ऑल। यूनाइटेड नेशन ने क्या गोल सेट किए हैं ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, ये भी हम देख लेंगे कि यूनाइटेड नेशन कितना हिपोक्रेटिक है अपने अपने वीटो देशों को लेकर। सेकेंड चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम देखेंगे 3 मेजर टॉपिक्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, ओके, और जीडीपी में इनका रोल क्या है और एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडरी सेक्टर में हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग,
कंस्ट्रक्शन, फिर इनका जीडीपी में रोल क्या है और एम्प्लॉयमेंट कितना देते हैं ये। टर्सरी सेक्टर में हम देखने वाले हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर से इनका जीडीपी में रोल क्या है और एम्प्लॉयमेंट कितना देते हैं ये। सिंपल। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इस बेसिकली थ्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ईटीसी, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट में। टर्सरी सेक्टर में आते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इनका जीडीपी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर। थर्ड चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट। मनी और क्रेडिट को भी हम थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। रोल ऑफ मनी, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी। सेकंड है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट, एंड थर्ड इज सेल्फ हेल्प। ऑब्वियसली रोल ऑफ मनी का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। रोल ऑफ क्रेडिट में हम देखने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स। सेल्फ हेल्प में देखने वाले हैं व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प, ग्रोसरीज, फंक्शन एंड ऑल। Diving into the next chapter, we have globalization and Indian economy. This is also divided in three topics. First is globalization, impact of globalization, and factors. What are the factors of globalization? तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग we are going to see in globalization what is the meaning of globalization, again what is the features of globalization and what is the benefits of globalization. What are the then next topic is impact. How much changes in productivity occurred, trade investment occurred, how much trade and investment occurred, patterns, challenges, all these things we are going to study in impact of global. Factors, what are the factors? So basically technology, liberation, privatization, we are going to study all of this. Now the last chapter, consumer right. Consumer right, we are also going to describe in three major topics. First is consumer right, second is responsibility of consumer, एज अ कंज्यूमर हमारी क्या जद्दोजहद बनती है। थर्ड इज कंज्यूमर मूवमेंट। फर्स्ट इज कंज्यूमर राइट्स, राइट टू सेफ्टी, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, फिर right to seek redressal. These are the rights that are the various rights that we are going to study in this chapter as a consumer. And as a consumer, what are our responsibilities, such as awareness. We have to be aware what
what we should buy and what we should promote and all. Protection of environment. As a consumer, we have to protect our environment. And collective activities of our consumer. Third is consumer movement. So, what are the role of consumer organization and methods of consumer practice. We are going to see methods of consumer practice. So this is all about the syllabus of class 10th. And one thing I want to discuss, the question asked in CBSE exam is in 5 categories. The question is in 5 categories. We can divide it into 5 sections: A, B, C, D, E. Okay. So first is MCQ types of question. MCQs. Second is very short answer type questions. Third is short answer type question. D is long answer type question, or again case based questions. Okay. So MCQ, we all know it is all question belongs to 1 marks. Very short answer have 2 marks. Short answer type question have 3 marks. Long answer type question have 5 marks. And case based study always have 4 marks. In all subjects में साइंस में और मैथ्स में MCQs 20 है, मैथ्स में भी 20 है, सोशल साइंस में भी 20 है. And very short answer the question varies in all between these 3 subjects. Short answer type also varies, long answer type also varies, but in all case based question is basically is an integrated part of the whole syllabus. केस बेस्ड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं. बट इन SST there are additional type of question. F, it is of 5 number, 5 marks contain करता है और ये मैप्स रिलेटेड होते हैं. मैप्स रिलेटेड जिसमें 2 मार्क्स हिस्ट्री से आता है, हिस्ट्री मैप रिलेटेड, एंड 3 मार्क्स जियोग्राफी मैप रिलेटेड. सो दिस इज इट. हम क्वेश्चंस मैं बोलना चाह रहा हूं कि हम चैप्टर्स को ध्यान नहीं देके, जैसे बहुत हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली चैप्टर्स को पढ़ते हैं कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर बिकॉज इससे ज्यादा मार्क्स में आते हैं, दिस चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स पूछे गए हैं. ऐसा नहीं, हम क्वेश्चन बेस्ड से पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी होगा. फर्स्ट वी कैन सी दैट CBSE है या फिर जैक है या फिर कोई भी एजुकेशनल बोर्ड है, वो सिर्फ 5 क्वेश्चन टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है. देन वी हैव टू एनालाइज. फर्स्ट वी हैव टू रीड द चैप्टर फ्लुएंटली, अच्छे से पढ़ के वी हैव टू एनालाइज कि MCQs कितने हो सकते हैं, कौन से टॉपिक से MCQs निकलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से टॉपिक से निकलता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, लॉन्ग आंसर टाइप एंड केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं. देन नो वन कैन स्टॉप अस. अगर हम एक टॉपिक को पूरे अच्छे से जाने तो उस टॉपिक से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बने तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू आंसर दैट. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑब्वियसली आंसर दैट. MCQ पूछे ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू आंसर दैट. एंड इफ देयर इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन from social science, obviously we are going to answer that. और ये आसानी से, तो ये बेटर है कि हम टॉपिक्स पे ध्यान दें कि हम टॉपिक्स या चैप्टर्स को कैसे फ्लुएंटली अच्छे से पढ़ने, लाइक अ स्टोरी, नॉट लाइक अ फैक्ट, लाइक अ स्टोरी. एग्जाम्पल के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री. तो हम उसे स्टोरी की तरह पढ़ें कि कैसे स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, कॉजेस क्या थे, उसी के कारण क्या इवेंट्स हुए और इवेंट्स के कारण क्या आउटकम्स निकले. देन वी हैव पूरा का पूरा मैप ऑफ दैट चैप्टर, ऑफ दैट टॉपिक. अब उस टॉपिक से हमें लॉन्ग आंसर पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, MCQ पूछे, हमें क्या फर्क पड़ता है, वी आर गोइंग टू आंसर दैट. सो दैट्स इट.
So this is all about the syllabus and various important topics of from the whole syllabus. Hope you like it. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के पास भेजें, अपने पापा मम्मी के पास भेजें और उन सब के पास भेजें जो एडुकेशन को बहुत प्यार करते हैं. So this is Anmol Anand. Until next time,